हे गाइस, अपडेट फ्रॉम इटली। जैसा को आप लोगों को पता है कि हमारा जो लॉकडाउन का सिलसिला था वो 14 अप्रैल तक था, तो अभी वो एक्सटेंड हो गया है 5 मई तक। तो मैं वो जो फूड का सामान लाया था वो तो मेरे पास ख़त्म हो गया है। आज फिर से जा रहा हूँ स्टोर, तो मेरे साथ रहिए। आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि हमारे क्लासेस ये लोग किस तरह कंटिन्यू रख रहे हैं ऑनलाइन। Hope you all are doing good and well. This is my daily life today in Italy. I am living in Cassino city and I will show you how the daily life around here. That's the center of the city. Usually here is full of cars. As you can see, there are not so many. That all the shops are closed. This is the local market close to my hostel. I am outside the supermarket now because they let few people go inside, means few people at a time, not more than 3 or 4 inside. In the supermarket you can find everything you need, no problem of food items. Only pharmacies can be open. If you need something like medicines, then you can go out. अच्छा, तो अब तब भैया आज हम क्या बनाएंगे? बिरयानी। कौन सी बिरयानी? सिंधी? ज़बरदस्त। आओ करना। है गाइस, अब तक भाई भूख से जो है ना मरवा दिया। क्या कर रहे हो यार? यार बिरयानी चाहिए, तो कोई लोबिया तो नहीं खाना है कि जल्दी बताओ। एंट्रेंस में 2 रूम्स है। एक में आफ्ताब रहता है, दूसरे में एक इंडियन क्लासमेट है। यहाँ के हॉस्टल के रूम्स बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत बड़े। हाँ, यहाँ पे सहूलत बहुत ही ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हॉस्टल का रूम है। यहाँ पे टेलीफोन, वेब सर्विस, सब कुछ अवेलेबल है आपको। देखते हैं यहाँ क्या बना दिया है इसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
doing online classes and we are using our laptops to attend the lessons. And I told you outside everything is closed. That's why it is impossible to go to university these days. और हमारे साथ रहिए। आज हम Hi guys, है गाइस